आज हम इस वीडियो में कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। Compton experimental arrangement is this. Compton used monochromatic X-rays of wavelength lambda fall on a graphite target, graphite scatterer we can say. The distribution of intensity with wavelength is measured for X-rays scattered at any scattering angle theta. The scattered wavelengths are measured by observing Bragg reflections from a crystal, this crystal single crystal, and their intensities are measured by a detector such as this ionization chamber. Compton did his experiment in 1921 when he was studying the scattering of X-rays. He noticed that the scattered radiation consisted of two components, one having same wavelength as that of the incident X-ray by an amount which depends on the angle of scattering. The changed radiations are called modified radiations, and these radiations have a shift in wavelength, and that wavelength shift is known as the Compton shift. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉम्पटन ने एक्सरेज लेकर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने वेवलेंथ लैम्डा की एक्सरे को फोल्ड करवाया ग्रेफाइट टारगेट पर, और बहुत सारे एंगल से स्कैटरिंग हुई, और उसने इंटेंसिटी जो स्कैटर्ड एक्सरे की थी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, उसने उस स्कैटर्ड एक्सरेज की इंटेंसिटी को वेवलेंथ के फंक्शन के द्वारा कैलकुलेट किया। एंड इंसिडेंट बीम जो एक सिंगल वेवलेंथ की बनी हुई थी, वो स्कैटर्ड होने के बाद दो पिक्स उसको इंटेंसिटी के मिले जो कि वेवलेंथ के विद रिस्पेक्ट वो मेजर कर रहा था। एंड उसमें एक जो कंपोनेंट उसको मिला वो वही सेम मिला जो कि इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ का था, और जो दूसरा कंपोनेंट मिला उसमें वेवलेंथ चेंज हो चुकी थी, एंड दैट वेवलेंथ इज लार्जर बाय एन अमाउंट डेल्टा लैम्डा, एंड दिस वेवलेंथ विच इज शिफ्ट by this larger amount is known as the Compton shift. Let us study in detail the thoroughly Compton effect. Compton ने 1923 में कंफर्म किया थ्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी द ड्रामेटिकल नेचर ऑफ और द पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ रेडिएशन. Compton studied that the presence of scattered wavelength lambda prime cannot be understood if the incident X radiation is regarded as a classical electromagnetic wave. Because in the classical model, the oscillating electric field vector in the incident wave of frequency nu acts on the free electrons in the scattering target and sets them oscillating at that same frequency. The oscillating electrons, like charges surging back and forth in a small radio transmitting antenna, radiate electromagnetic waves that again have the same frequency nu. Hence, according to the classical picture, the scattered wave should have the same frequency nu and the same wavelength lambda as the incident wave. क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमें कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब वो इंसिडेंट करता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स पर, जो एक सिंगल क्रिस्टल मैंने आपको दिखाया पीछे डायग्राम में, उस सिंगल क्रिस्टल किस चीज का बना हुआ है? एटम्स का। एटम्स उसमें रेस्ट की पोजीशन में है। उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करती है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को ओसिलेटरी बना देता है, और इलेक्ट्रॉन अपनी बैक एंड फोर्थ पोजीशन में ओसिलेट करते हुए एक्स्ट्रा रेडिएशंस को उसी सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमें ये बताती है, पर कॉम्पटन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने पाया कि एक कंपोनेंट जो वेवलेंथ का है वो लार्जर हो जाता है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट वेवलेंथ. सो इट मीन्स देयर इज सम शिफ्ट, एंड दैट शिफ्ट इज द कॉम्पटन शिफ्ट.
So it means the classical electromagnetic theory failed there to explain the Compton effect. Compton independently interpreted his experimental results by postulating that the incoming X-ray beam was not a wave of frequency nu, but a collection of photons means particle type nature, and but a collection of photon each of energy h nu, and these photons collided with the free electrons in the scattering target. कॉम्पटन ने क्या कहा? कॉम्पटन ने कहा कि जो रेडिएशन है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स की बनी हुई है, और वो फोटॉन्स मीन्स एक पार्टिकल का नाम दे दिया उसने रेडिएशन को, एंड पार्टिकल्स मीन्स फोटोन जिसकी एनर्जी है एच न्यू, और वो फोटोन्स जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं, जो भी आपने उसने स्कैटरिंग टारगेट लिया था ग्रेफाइट टारगेट, उस इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब वो फोटोन्स कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है उनके बीच में, तो उस कोलिजन के कारण रिकोइलिंग फोटॉन्स emerging from the target make up the scattered radiation. मतलब कि जो कोलिजन के बाद जो फोटोन रिकोइल होकर आ रहे हैं, रिकोइल हो गए हैं, बाहर आ रहे हैं टारगेट से, उसके कारण जो स्कैटर्ड रेडिएशन बनती है उसके वेवलेंथ के कंपोनेंट में कॉम्पटन शिफ्ट दिखाई देती है. क्यों? क्योंकि since the incident photon transfers some of its energy to the electron with which it collides, and the scattered photon, क्योंकि वो कोलिजन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी स्पेंड होगी. तो जो स्कैटर्ड फोटोन है, जो बाहर आने वाले फोटोन है, स्कैटरिंग हुई है जिन फोटोन्स की, उनकी एनर्जी लो हो जाएगी बिकॉज दे स्पेंट देयर एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन. It must therefore have a lower frequency, because we know that E is equal to h nu, in turn nu is equal to E upon h. If energy is lower, then the frequency will be lower. And as frequency is lower, then by the expression C is equal to nu lambda, we can say that the wavelength becomes longer. So this point of view accounts qualitatively for the wavelength shift, and in this interaction the X-rays are regarded as particles because photons strikes with the electrons. यहाँ पर रेडिएशन का नेचर, वेव नेचर शो नहीं हुआ. वेव नेचर तब शो होता जब इलेक्ट्रॉन जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रेडिएशंस को, वो उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होती. पर वेवलेंथ ज़्यादा मिली, फ्रीक्वेंसी कम मिली स्कैटरिंग होने का, इट मीन्स जो फोटॉन्स हैं उन्होंने अपनी एनर्जी को खर्च किया. रेडिएशन फोटॉन्स की बनी हुई है, उसका पार्टिकल टाइप नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन्स से टकराए हैं, और जब वो टारगेट से उठकर स्कैटर्ड हुई है रेडिएशन, वो किस रूप में हुई है, वो फोटॉन्स बाहर आए हैं, वो फोटॉन्स टारगेट से आगे आए हैं स्ट्राइक होने के बाद, कोलाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन से, जिनकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब किया ड्यूरिंग कोलिजन, या यूं कहे कि जिनकी एनर्जी खर्च हुई है कोलिजन में. तो जब उस एनर्जी, वो बची हुई एनर्जी से बाहर आते हैं, मीन्स जो डिक्रीज हुई है, जो लोअर वैल्यू हुई है एनर्जी की, उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर होगी, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच न्यू. But there is the longer wavelength because we have one expression C is equal to nu lambda. Velocity of light is nu lambda. So as the frequency lower, the lambda increases. Wavelength बढ़ जाती है. So in the Compton experiment, we find the particle nature of radiation. So points में पढ़ेंगे. First, an increase in the wavelength of X-rays and gamma ray, then the scattered. Second, scattering of a photon by a charged particle, usually an electron, results in decrease in energy of the photon or increase in wavelength. Third, a part of the energy of the photon is transferred to the recoiling electron, and what is inverse Compton scattering? Inverse Compton scattering is happened when a charged particle transfers parts of its energy to photon. जब एक चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी के कुछ पार्ट को फोटोन को दे देता है, तो उसको इनवर्स क्वांटम स्कैटरिंग कहते हैं. Let's discuss about the theory of Compton effect. The very first point is that Compton treated a beam of X-rays of frequencies nu as a beam of photons and each of energy h nu and momentum h nu by c.
Secondly, the atomic electrons of scattering material can be treated as free and rest in comparison to the photons of incident X-ray beam because the binding energy of electrons in atoms is approximately 10 electron volt, which is very small as compared to the energy of X-ray photon, that is 10 kilo electron volt approximately. Thirdly, the scattering of X-ray photons with atomic electrons can be taken as an elastic collision because of the law of conservation of energy and momentum. Let us consider before collision, the energy of incident photon is h nu, momentum of incident photon is h nu by c, and rest mass energy of the electron is m naught c square. After collision, the energy of scattered photon is h nu prime, momentum of scattered photon is h nu prime by c, and energy of the recoiled electron is mc square. By applying the law of conservation of energy, that is, the energy of the system before collision is equal to the energy of system after collision. What is system? The system is electron energy plus photon energy. As we consider the electron at rest due to its binding energy is very low as compared to the photon. So rest mass of photon electron will be considered. So the energy of the electron is the m naught c square, and the energy of photon before collision is h nu. After collision, the energy of the system is h nu prime plus mc square. Similarly, if we apply the law of conservation of momentum, the momentum before collision is h nu by c plus 0, as the electron is at rest before collision, so its momentum is taken as 0. After collision, the scattered X-ray photon making an angle phi in the direction of the incident photon, along with the direction of incident photon, and the recoiling electron is making an angle theta, and because we are considering along the direction of incident photon, so the cosine component of both are considered. So we get the momentum before collision is h nu by c plus 0, and after collision the momentum is h nu prime by c cos phi plus m by c cos theta. Applying law of conservation of momentum along perpendicular direction to the incident photon. Along perpendicular direction there is no momentum before collision, and after collision the momentum of photon is h nu prime by c sin phi, and momentum of electron is minus m v sin theta. On squaring and adding our equations, we get m square v square c square cos square theta plus sin square theta, and this equation which is shown on the screen, and cos square theta plus sin square theta is 1, as we all know. So we get m square v square c square is equal to h square v square, and this equation. And this equation, lastly, after solving this, simplifying the above expression, we get this equation. mc square is equal to h nu minus nu prime plus m naught c square. Squaring this equation, we get m square c4 is equal to h square nu minus nu prime over square plus m naught square c4 plus 2h m naught c square minus nu. By simplification these equations you can calculate these by putting this value n is equal to m naught root 1 minus v square by c square.
So at last we get the expression for the Compton shift, that is delta lambda is equal to h by m naught c in the bracket 1 minus cos phi. So let us consider the cases one by one. When phi is equal to 0, phi is equal to 0 degree, then cos phi is equal to 1. And delta lambda is h by m naught c 1 minus cos phi. So this equation becomes delta lambda is equal to 0 because 1 minus 1 is 0. Means there is, if delta lambda is 0, means there is no change in the wavelength of scattered photon in the direction of the incident photon. सेकेंड केस इफ फाई इज पाई बाई 2, अगर फाई 90 डिग्री है तो कोस फाई 0 हो गया, जिससे कि हमें जो कॉम्पटन शिफ्ट मिलेगा वो मिल जाएगा एच बाई एम नॉट सी के इक्वल. अगर हम एच और एम नॉट एंड सी की वैल्यू पुट करते हैं देन वी गेट द कॉम्पटन शिफ्ट एज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. मीन्स द कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. थर्ड केस इफ फाई इज इक्वल टू पाई, अगर फाई 180 डिग्री के इक्वल है देन कोस फाई इज -1, then in that case we will get delta lambda is equal to 0.0484 into 10⁻⁻10 meter, double than the Compton wavelength of electron. By a simple calculation, we find that lambda prime minus lambda is h by m naught c 1 minus cos phi. If we divide this equation by lambda, then we get lambda prime by lambda is 1 plus h by m naught c lambda in the bracket 1 minus cos phi. If we put h by m naught c lambda is equal to alpha, then lambda prime by lambda is 1 plus alpha